कॉलेज में आई वाज इन ऑल बॉयज़ कॉलेज, वहाँ पे गे क्लब होता था हमारा एक, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर. So like, we want to invite you, sing for us, we find you really cute, so why don't you just come and sing for us and entertain us. Absolutely, this one is for the boomer generation. Like उस generation में सच में लोग बहुत conservative हैं. वहाँ आपको समझाना पड़ता है कि वो बोलते नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा. तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ी आप ज़िंदगी जीते हो. फॉर द फर्स्ट स्टेप कि एटलीस्ट डिक्रिमिनलाइज हुआ है होमोसेक्सुअलिटी. अब आगे जाके शादियाँ होंगी तो अभी तो अडॉप्शन भी नहीं कर सकते, 10 चीज़ें और हैं, ह्यूमन सिविल राइट्स नहीं हैं. तो बेसिक ह्यूमन राइट्स इशू है यार. अगर दो लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? There are actors today breaking the stereotypes, and there's one person who's making his own new stereotypes, Ayushmann Khurrana. And we have Jitendra Kumar, who has been a huge phenomena on the digital platform, making his debut with this film, Shubh Mangal Zyada Savdhan. And we have both of them joining us together for a fun conversation only on Pink Fida. You know, I have to tell you first that the promo is outstanding, okay? When you talk about a subject like this, and it has to be treated in a humorous manner, because previously jo bhi movies aaye isme, it has been a little serious. Like even when you see an Ek Ladki, which I really loved, but it was not really funny, as comical or hilarious as this one. Do you think that this kind of a subject, for it to penetrate that audience, which it needed this kind of a humor? Absolutely. The idea is to reach out to those people who are homophobes. Yeah. That's our target audience. This is not for those who are always, like, who are with the LGBTQ community. We are going to reach out to those people who are against homosexuality. अगर वहाँ तक हमारी फिल्म पहुँचती है, then I think that will be a huge victory for us. What about you? हाँ, मुझे लगता है कि फिल्म में ह्यूमर तो बहुत ज़रूरी था, और ये ह्यूमर मतलब बहुत एडिशनल ह्यूमर नहीं है, ये वो बहुत नेचुरल रिएक्शन है जो किसी को भी ये न्यूज़ सुन के आता है अभी जो हाल है भारत का इंडिया का, उस तरह का जो रिएक्शन है, तो वो आई थिंक फिल्म में दिखाया है, और वो इसलिए थोड़ा फ़नी लग रहा है, बट वो सारी चीज़ें नॉर्मल और रियल है फिल्म में. तो एक एंटरटेनर की ज़रूरत थी इस टॉपिक को, वो मिल रहा है अभी. You know, love is love, and that we are celebrating it today, and it's taken India a long time to actually accept it. With you coming on the bandwagon, you know, previously there were so many times when Karan Johar has gone on record saying that जब उन्होंने casting करने की कोशिश की for Fawad Khan's role in Kapoor and Sons, which was a very subdued, subtle tribute to homosexuality, but his character was very subtle. बहुत सारे big actors had said no to the film, you know. Today when an A-list actor comes, it becomes more mainstream, right? Do you think it needed an Ayushmann Khurrana to come and speak about it? Because I don't know how many other people would have actually done it. It just gives you more reach. If you get like a bankable actor for this subject, it gives you better reach. It makes you penetrate more. True. Especially in BNC centers, जहाँ पर लोगों को they are still averse to homosexuality. Yeah, to the idea. They're not open. That's the only thing. Like if you are, of course, if you are taking newcomers, then I think वो पहले word of mouth film बनेगी, उसकी reach कम हो जाएगी. So it really helps, of course. Not newcomers, you know, even established actors, they are not really open to doing it. Did you see that? How many people actually came up and, you know, not maybe asked you to not do it, but how many times people frowned when you said that you're doing this film? There were a lot of people, of course. There were a lot of people, and I told them there's a kissing scene also in the film. So they were like, "Oh my God, are you serious?" I said, "Yeah, but how will you normalize it? You have to normalize this. Why don't you see PDA in same genders? Yeah. Like in India, you see that abroad. I was shooting for Dream Girl and I saw these two guys kissing in the parking. I was shooting late at night in one mall in Bombay. I was like, India is ready for this. We should go for it. And that's what we went for it. This is very important. The crux of it's a love story. Yeah, and more than anything else, it's also a reaction of the family. Yeah. जो इन दो लड़कों के बीच में हो रहा है, क्या हो रहा है? Family is getting intrigued, they're getting worried. Especially in the middle class family, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है. And वहाँ से humor निकल रहा है फिल्म के अंदर. So it's a very entertaining family film. When you are making your debut in Bollywood, I'm sure these are the concerns that people must have said कि अरे first film में ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला होगा ना लोगों ने, because it all comes from that preconditioning that I think we have in the country. I think हाँ, thankfully मैं जिन लोगों का दोस्त हूँ वहाँ से मुझे ये कंसर्न नहीं मिले. मुझे ये मिला कि एक बार हाँ स्क्रिप्ट सुन लो और रोल देख लो कि कितना अच्छा है, क्या है, किस तरह से प्लेस्ड है, वो सारी चीज़ें ज़रूर सुनने को मिली मुझे. बट हाँ ऐसा कुछ कंसर्न नहीं आया कि अरे ये क्या टॉपिक पे फिल्म है, ऐसा थैंकफुली मुझे नहीं आया. So I'm very thankful. You know, Ayushmann, when you started off with a film like Vicky Donor,
Today, if Vicky Dona had released, it would have done almost triple the numbers that it did, but it was still a successful film back then. So India was just getting open to those kind of films. Today you've become the torchbearer of such films. Okay? आज जॉन एब्राहम जाके बोलता है कि हम लोग वो मूवी कर नहीं सकते बिकॉज वो सारी मूवीज हमारे पास आती नहीं है बिकॉज आयुष्मान ले लेता है सब कुछ और आयुष्मान के पास ही जाती है मूवीज. हाउ डू यू फील? इट्स अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज एंड इट्स ऑल्सो अ पोजिशन ऑफ ऑनर दैट पीपल आर गिविंग यू इन द इंडस्ट्री टुडे. दैट आयुष्मान होगा तो कुछ डिफरेंट ही होगा. It feels great, yeah. Of course, it also gives you slight pressure that you have to, live up to people's expectations, your own expectations also. But having said that, it gives you the courage. It gives you the courage that you should pick up subjects जो quirky हैं, जो edgy हैं, radical हैं, which are like the first attempt in Hindi cinema, and I'm ready for it. Like it's a validation, so it makes you more ballsy, I think. Yeah, but does it also help when you have a successful track record with such films? Like अगर एक movie उसमें से नहीं चलती पहली वाली, do you think you would have attempted it, or would your entire entourage be okay with you attempting I think it? I'll always try to do something different. वो चले ना चले, या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है. I think failures are great learning curves. I think जो मैंने अपने failure से सीखा है वो success से नहीं सीखा है. So it's fine if film doesn't do well. I think it will teach you something, but the idea is to do different things. You know, to both of you, how do you treat male gaze towards you? And has it ever happened when a man has hit on you and you've realized or you've not realized? How have you reacted to it? आई थिंक कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे कुछ लोग जो दोस्त हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और देन दे ओपन टू यू कि वो दोस्ती से ज़्यादा कुछ और फील करते हैं तुम्हारे लिए. तब हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन आता है क्योंकि मैं स्ट्रेट आदमी हूँ, तो फिर मैं उनको प्यार से बताता हूँ कि नहीं मैं उस तरह से फील नहीं करता, मेरे लिए दोस्ती है. बट हाँ उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है वो, लेकिन वो भी समझते हैं इस बात को. तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ, पर सब मैनेजेबल है. मेरे साथ हुआ है ऑफ कोर्स हुआ है. कॉलेज में आई वाज इन ऑल बॉयज़ कॉलेज, वहाँ पे गे क्लब होता था हमारा एक, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर. So like, we want to invite you, sing for us, we find you really cute, so why don't you just come and sing for us and entertain us. तो मेरी फट गई थी. मैंने कहा सर मेरे से नहीं होगा ये, मतलब आई एम वेरी स्कैर्ड, आई कांट just can't. So I was like borderline homophobic that time, and times have changed, the society has changed, we've evolved so much as a society. And then that was in Chandigarh in 2004 or 5. मैं चंडीगढ़ से बाहर गया, दिल्ली गया, वहाँ पे लोगों से मिला. I made good gay friends in Bombay also, a lot of people from the community. So your awareness, your evolution was like right there. So now I'm like the flag bearer of LGBTQ community in Bollywood. अब ये फिल्म कर रहे हैं शुभमंगल सावधान. अब मुझे लगता है कि मैं पागल था उस टाइम पे क्या. And but the thing is, this is the potential, human potential everybody has. True. If I can see that transformation, if I can see that great change in me, then rest of the people who are homophobes in 2020, they also have the potential. True. They can also be open. ये फिल्म उनके लिए है जो अभी against हैं homosexuals के. But has it ever happened when you felt that you were being homophobic towards anybody? नहीं, मतलब जब मैंने पहली बार 15-16 साल का रहूँगा तो मुझे ये चीज़ पता चली थी कि गेज जैसी कोई चीज़ होती है, और मतलब उनका जो सेक्सुअल टेंडेंसीज हैं वो क्या होती हैं. मुझे पहली बार 15-16 साल का था, तो मैंने बहुत उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लिया था, क्योंकि उसी टाइम पे तुम बुक्स में रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, और मैं थोड़ा अमेज्ड ही था कि ये चीज़ बुक्स में क्यों नहीं है. मतलब ये वाली अगर तुमने सेक्सुअल वाली चीज़ें डाली हैं बुक्स में, तो वाई नॉट ये वाली चीज़ हमें क्यों नहीं बताई. तो वो उस तरह से अमेज था, बट मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन की तरह लिया था, मैं कभी भी होमोफोबिक रहा नहीं. But you know, something that is wonderful with you is that you just accepted that at one point you were homophobic. I feel people who have been and who still are won't even realize that they are being homophobic towards people, and their tendencies differ. But also what comes is that, people talk about molestation when women come about and speak. A lot of times, men also go through that, and I think most of us have gone through the same when we were kids or when we were much younger. But do you think that men, the fear of not speaking up also works there? Has it ever happened where you also have gone through something where you couldn't even speak up? No, fortunately no. But do you think that the fear works there as well? Like you said, that the fear of not speaking up. Yeah, fear तो हर जगह होता है. Could be like even from like somebody who's your senior, who's a female, also, that fear comes from everywhere. It's not gender specific. Another thing that is very progressive in the film is
the fact that Neena Gupta is very accepting, and you show that eventually she has the, and जो गजराज जी का सर का एक डायलॉग होता है तो हाँ माँ के पास दिल होता है और हम लोग तो बैटरी से चलते हैं. So you know we do see that often dads are a little against it, even in Ek Ladki or maybe any other film that we saw. Honestly speaking, I think this is a very progressive way of showing the modern Indian family. Especially, I do agree with the fact that women and mothers are a little more liberal and a little more progressive. Because my mother watched the trailer and she, I don't know if it is progressive or if she like यही होना चाहिए. एक तो लड़का लड़की पागल हो रहे हैं सब शादी करके इसको हैंडल कर हम देखो आई कांट हैंडल योर डैड ओनली योर डैड कांट हैंडल मी शुड बी लाइक दिस ओनली गर्ल्स शुड गेट मैरिड टू गर्ल्स बॉयज शुड गेट मैरिड टू बॉयज दिस इज व्हाट शी सेड एंड शी you know at her age I was just asking her if people her age will be comfortable watching a film like this. She said I think I will be very comfortable. Does that give you a sense of validation when something like this comes from an age group like that? Absolutely. This one is for the boomer generation. Like उस generation में सच में लोग बहुत conservative हैं. वहाँ आपको समझाना पड़ता है कि वो बोलते नहीं ये natural नहीं है, ये normal नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा. तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ी आप ज़िंदगी जीते हो. You know, there are a lot of heterosexual couples who don't want to produce kids यार. उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो लेकिन हाँ फॉर द फर्स्ट स्टेप कि एटलीस्ट डिक्रिमिनलाइज हुआ है होमोसेक्सुअलिटी. अब आगे जाके शादियाँ होंगी तो अभी तो अडॉप्शन भी नहीं कर सकते. 10 चीज़ें और हैं. ह्यूमन सिविल राइट्स नहीं है. तो बेसिक ह्यूमन राइट्स इशू है यार. अगर दो लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना. आप ठीक है आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो या बॉयफ्रेंड के साथ रहो. वो अपने बॉयफ्रेंड से अपनी गर्लफ्रेंड से रहना चाहते हैं. व्हाट इज़ द इशू? अपनी ज़िंदगी जियो. What about you? How do your parents, do you see a change in their perception ever? मुझे लगता है कि यार उन्होंने उनके मतलब हम लोग 15-16 साल के होते हैं तब हमें ये सेक्सुअल टेंडेंसीज आती हैं और हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है. और हम लोग कभी भी एक तरह की चीज़ नेचुरल बताई जाती है और एक तरह की चीज़ अननेचुरल बताई जाती है हमें. और उनको लाइक मेरे पेरेंट्स को 40 साल हो गए कि ये सुनते हुए कि ये अननेचुरल है और 40 साल के बाद तो मैंने उन्हें समझाने जाओगे कि ये एक नेचुरल लव है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी वो किसी भी इंसान को. बट मेरी फैमिली की खास बात ये कि वो थोड़ी सी ओपन माइंडेड है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और उनको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं. तो आई थिंक उनको ऑफकोर्स शॉक लगेगा अगर कोई उनको जाके बोले कि अच्छा ऐसा हुआ या इवन वो मेरा ट्रेलर ऐसा देखें और किस करते हुए मुझे देखें तो थोड़ा सा उनको शॉक लगेगा. बट आफ्टर अ पॉइंट दे आर वेरी वो बहुत एक्सेप्टिंग समहाउ. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जब भी मैंने कुछ उनको ऐसे लाइफ में जब भी ऐसे शॉक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बताई हैं या दी हैं तो उन्होंने बहुत ओपनली आके मतलब एटलीस्ट मुझे सुना है. Which is nice. Which is nice. How has your family reacted to the trailer and the kiss? Like you said that a lot of people were shocked when you told them that there is a kiss in the film. How has your family reacted? Because Tahira, I know she's the coolest. Yeah. So is Apar. So how have they reacted and how have your mother and father reacted? They were very proud of me. They were like very good. ये तो बननी चाहिए फिल्म. And of course वो तो कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे हमेशा. True. So I told them that I was actually actively looking for a film on homosexuality. And before it came to the fore that I was like looking for it कि यार homosexuality की commercial film होनी चाहिए. Thankfully मुझे मिल गई.